Good morning, everyone. Can you all hear me? Yes, you can. Okay, great. Sangeeta ji, do you have a question? Good morning, ma'am. Good morning. Good Very, morning. very happy morning, Mahima ji. Same to you. Very good morning. Good morning, Mahima ji. Good Very morning, good Mahima. morning. Good morning, everyone. Very good morning to everyone. Sangeeta ji, do you have a question or something? Your hand is raised. Good morning. Good morning, Mahima ji. Very good morning. Okay, since we are having different noises, I'm going to be muting all. If there's a question or anything you want to say, you can ask me to unmute you. Until then, we wait for a bit. We wait until 6 o'clock. Okay. Please nominate yourself for reading until then in the chat. And switch on your videos if you can. Hi Kamalji, I read your sharing and it is amazing. Good to know that you're doing well for affirmations. Okay, let's do one thing. Until other people come, let us all do our affirmations today like we did yesterday. And you can unmute yourself now and just say, like we were saying yesterday, I am happy, I love happiness. Okay, let's do that. Yes, I'm happy. I am happy. I I am love happy. happiness. I want I am happiness. happy. I love happiness. I am happy. I love happiness. I am happy. I love happiness. I love happiness. Today is the best I day am of my happy. life. I am happy and I love happiness. I'm happy and I love happiness. I am happy. I am happy. I I am love happy. happiness. I'm I'm happy. so happiness. I am happy. I love I love happiness. happiness. I love happiness. I'm happy. I'm happy. I'm I love confident. I happiness. love happiness. I love I am Best day happy. of my I life. love I love happiness. happy. I love happiness. I'm the winner. I love I am happy. I love I love happiness. I'm the I winner. am I'm I the am winner. I love happy. I happiness. love happiness. I love I, happiness. I I'm am happy. happy. I I I love 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 happiness. happy. Best I'm of my happy. life. I I love am I'm happy. I happy. love I happiness. love I happiness. love I'm I am happy. happy. I love I am happiness. I love I am happiness. happy.
I love I'm happy. I love I'm happiness. happy. I love I'm happiness. So I happy. love happiness. I जैसे love बरसात हो रही है. I'm so happy. I love happy. I am so happy. I am so, happy. So happy. I I love love happiness. I'm so happy. I am so I'm happy. so I'm so happy. I'm so I love happiness. I am happy. I love Happiness. designer. I am happy. I am happy. I love happiness. I am happy. I I love am happy. I love happiness. Happiness, I am happy. love I love happiness. happiness, I am happy. I I love love Thank you. happiness, I Thank am you. happy. I love happiness, I am I happy. love happiness. I love I love happiness, happiness. I am happy. I am happy. I love happiness, I am I love happy. happiness. I love happiness, I love happiness. I am I love happiness, I am happy. love I love happiness, I am happy. I'm I love happy. happiness, I am I'm happy. I'm happy. I I'm am happy. I love Good morning. Good morning. I'm happy. I'm happy. I love सुप्रभात happiness. महिमा जी. Very good morning, Kailash ji. Good morning, Mama. Good morning, Mama. Good morning. Very Good good morning. morning. Very good Everybody. morning. Good morning, everybody. Good morning. I'm the winner. Okay. I'm a joy. Yes, Today is the Okay. best day of my life. the winner. Yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I'm the winner. I'm I the am winner. the- I'm I the am winner. the- So happy. I'm so happy. I'm the so happy. Yes. very, very good morning. Very good morning. Lovely morning to everyone. Very lovely morning. I'm the Okay. winner. Good morning. We are done. I'm the winner. जहाँ खोदेंगे वहां से सोना निकालेंगे आज. मैं भगवान का Absolutely. बच्चा हूँ. Yes, I'm a Yes. child of Number God. one. Yes. Yes, I'm a child of God. Yes, भगवान का बच्चा. The child of God. Yes. पैसे की तो Absolutely. बरसात होने वाली है. खूब खूब बरसात होने वाली है. सब पैसे के समुद्र में तैरेंगे आज. ब्रह्मांड भर भर के नोटों की बारिश कर रहा है और अपन सब अवैध है इकट्ठे करके भर भर के अपनी अलमारियां भर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं. हम लोग सब ले रहे हैं. We are open and receptive. हम लेने के लिए तैयार हैं खुले हाथों से. तैयार है एकदम. ऊपर वाला देने Absolutely. को तैयार है और अपन लेने को तैयार है. Yes. Yes. के इवेंट का वेन्यू फिक्स हुआ मैम? Okay. So now what we'll be doing, just a second. Yes. Mahima, This we are was- not doing a peak exercise. Peak state we don't have right now, Dr. Vinod, but okay. we are doing the meditation, the Only. gratefulness Okay, meditation that Nikhil plays. Yeah. So we'll be doing that. Okay, just give Nikhil 5 minutes. He's here. I'm keeping everyone on mute. Please don't unmute yourself. Close your eyes and absolutely just be in the meditation. Breathing deeply in and out, feeling relaxed. Our whole body is relaxed and comfortable. Breathing deeply into your eyebrow space, in and out, turning your attention around, becoming the observer. Breathing into this state of inner being, the observer. Become your inner being, starting in this space of awareness of all that you are and all that you are becoming. Using the power of your vision, of your mind, of your feelings to create, and the power of your belief, your faith in what you really are to bring life to you. We're going to tell the story of our appreciation,
grateful right now. I feel so much appreciation for the wonderful life, for the momentum that is building, for all the things that are around me that I can be grateful for. I feel so grateful to have the awareness of who I really am, to see the truth of life and love. I'm so grateful I can feel my good feelings. I am grateful that I can feel a life of fulfillment. I am grateful that I can slow down enough to hear my inner kind of awareness, to feel what that kind of awareness is like. I love this feeling. I love the feeling of becoming. I am grateful for this feeling. It helps me to see my manifestations made real. I am extremely grateful for all the people in my life. I am grateful for my friends, for my family, for my children. I am grateful for my clients, colleagues, and business associates. I am intensely grateful for my partner, my mother, my father. I am grateful for my inner being's closeness and connection to Source, to all that is, to God. I am grateful that I am finally becoming aware of who and what I really am and are able to understand my role. The fact that I only need to focus on what feels good and I will attract all that I need and want to achieve my desires. I am grateful for the flow of ideas and loving thoughts which are becoming more prevalent in my mind with each day that passes. I am grateful for my good sleep. I am grateful for the days I wake feeling rested and renewed and eager. I understand that if I have days when I don't wake like that, that there is another opportunity the following night. I am grateful to have found my purpose, to understand which direction I am going. And I am grateful for the understanding that if things are happening that are not in perfect alignment, that it is temporary. And the sooner I am able to let go and trust that everything will be okay, the sooner I get back into alignment again. I'm so grateful for this alignment feeling. I'm so grateful for all the signs and signals I get to see along the way, which assist me in knowing. I'm incredibly grateful for my body, for my abilities, skills, and talents, for my awareness of my thinking, for my awareness of my feeling. I am grateful for the abundance that flows continually into my life. I am grateful for the wonderful creations that are becoming and how they are proof to me that I am a magnificent being and I can create my reality. I am so grateful for the moments when I see others who are aware too and the synergy we feel together as we both expand with moments of shared awareness. I am so grateful for that moment when we say in our hearts, I see you. I am grateful to you for listening. And I thank you for your openness. Breathing deeply in and out.
Wow, that was amazing, Nikhil. Thank you so much. Right. Thank you so much, everyone, joining in today. Yes, do we have a reader? Yes, Casey is reading. Do we have any questions or sharing, so we can start straight away? So what meditation does is, जैसे हम कोई भी लैंड पे कुछ उगाने से पहले सॉइल प्रिपेयर करते हैं ना, सो मेडिटेशन डज दैट वर्क. पहले हमने हमारी एनर्जी अच्छी की, फ्रीक्वेंसी ऊपर किया, आई एम हैप्पी बोल के, वी ऑल फेल्ट अ लिटिल बेटर देन वी वर ऑलरेडी, थोड़ा नींद में से जगे हम. एंड मेडिटेशन से एक सॉइल प्रिपेयर हो जाता है जहाँ आप और रिसेप्टिव हो जाते हैं, जो भी आपके दिमाग में जा रहा होता है उस वो अच्छे से जाता है. और right, so this is what we do through meditation. And yes, so Casey will be reading today. Nikhil, can you unmute Casey, please? Okay, as you can see here, we are starting with chapter 15, that is magically heal your relationships. You can see a photo frame here with a candle, and the candle has a heart on it. Okay, so everything has a meaning and there's magic dust on it. So that means like all of your relationships are blossoming. आपके सारे relationships इतने अच्छे हैं कि आप उनमें खूब सारा प्यार बना हुआ है. हार्ट का मीनिंग क्या होता है? when you love someone you show them this, right? ऐसा होता है, right? so हार्ट का मीनिंग होता है love, full of love. all your relationship जो भी है, इसमें देखिए जानबूझ के एक कपल नहीं दिखा है. everything is placed very cleverly, like it's not a couple, it could be anyone, it could be any of your relationship. so all your relationships are blossoming. So this is what the picture says. And Casey, would you start reading, please? Good morning, everyone. Good morning, Casey. If you have a difficult or broken relationship, or suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether the person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parents, friend or neighbor. Continue. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. That means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. Okay, just a second, Casey. So if you have a difficult, आज हम एक ही रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे जो आपका सही नहीं है, okay? जिसको आपको ठीक करना है. So if you have a difficult or broken relationships, or are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, हो सकता है कि आप उस इंसान से अभी बात नहीं करते हो, वो पहले मतलब broken है, मतलब पहले का कोई relationship है जो अब नहीं चलता, मतलब you just don't talk, okay? कुछ भी broken है कोई भी relationship में, आज आप एक relationship को उस ऐसा पकड़ेंगे, okay? And you can absolutely change that. आज हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो मैजिक देखेंगे. You can absolutely change it through gratitude. जो gratitude है, that will magically improve any difficult relationship. जो भी हो, हर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं आपको नहीं पता है, हमारा अलग सीन है, केस ही अलग है. ऐसा नहीं होता है. Everyone thinks like that. So please don't worry about it. Pick any one relationship, be it your mother-in-law, be it your husband, wife, brother, sister, कोई पुराना friend हो, anyone, your exes, anyone, father-in-law, whatever it is, okay? So yes, when we are faced with a difficult relationship or challenging situation, in almost all cases, जब ऐसा होता है, अगर आपका relationship already
turmoil में है, like it's not the perfect relationship, that means you're not grateful for that relationship. That is for sure. Okay, so what we do in that relationship, हम लोग उस relationship में we are blaming the other person. चाहे आप खुद समझ लीजिए कि आपके घर में कोई है, घर के बाहर कोई है, what do you do जब कुछ प्रॉब्लम होता है आपके रिलेशनशिप में? डोंट वी ब्लेम द अदर पर्सन कि अरे वो तो इंसान ही ऐसा है, नहीं नहीं वो तो आपको मालूम नहीं है, उसकी ये आदत है, ये मेरे साथ नहीं, वो हर किसी के साथ ये करता है. तो वी ऑलवेज ब्लेम द अदर पर्सन एंड वी डोंट हैव अ श्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड. उसमें मतलब श्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब उसमें तिनका भी ग्रेटिट्यूड का होता नहीं है. ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, वी ऑल नो दैट, कि ब्लेम करने से कुछ होने नहीं वाला, एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर. ओके, in fact the more you blame, the worse your relationship gets and the worse your life gets. ठीक है, मान लीजिए कि गलती सामने वाले की है और आपने उसको ब्लेम किया है कि नहीं उसकी गलती थी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. बट द मोर यू ब्लेम, जितना आप और ब्लेम करते जाएंगे उतना वो रिलेशनशिप और टर्मोइल में जाता जाएगा और उतनी ही बुरी आपकी लाइफ उसके कारण होती जाएगी. अगर आपकी लाइफ में एक बुरा रिलेशनशिप है, तो दैट विल अफेक्ट योर होल लाइफ. Please continue, Casey. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it on someone else. You are the one who gets burnt. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Okay, so it says अगर आपका वो करंट रिलेशनशिप है या पास्ट का, इट डजंट मैटर, बट अगर आपके मन में कोई भी बैड फीलिंग्स है उसके लिए कि मैं तो माफ करूंगा नहीं, मेरे साथ बहुत ही बुरा किया उस इंसान ने, या ऐसे कैसे कोई मुझे बोल सकता है, ऐसे कैसे कोई मेरे साथ कर सकता है, ये क्या था, ठीक है, जो भी आपकी बैड फीलिंग्स है वो इंसान के लिए, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड विल एलिमिनेट दोज फीलिंग्स. आप जब ग्रेटफुल होना चालू हो जाएंगे उस रिलेशनशिप के लिए, तो वो फीलिंग्स अपने आप चली जाएगी. व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव योर बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन? अब आप बोलेंगे मैं क्यों निकालूं मेरे मन से, मैं क्यों ये सब करूं, जब गलती उसकी थी तो मैं अपने मन से क्यों निकालूं? सो दिस इज द रीजन. सी, holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. इसका मतलब जब आप किसी से गुस्सा होते हो, हाँ, तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपने गरम गरम कोयला जो होता है ना, वो यहाँ पे रखा है, लेकिन आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है कि ये मैं पकड़ के दूसरे इंसान पे फेंकूंगा, राइट? दिस इज व्हाट यू थिंकिंग, बट यू आर द वन हु गेट्स बर्न. लेकिन फेंकने से पहले आपने ये रियलाइज ही नहीं किया कि आपके खुद के हाथ जल रहे हैं. हम उस एनर्जी में होते हैं, जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तो हम ऐसे ऐसे शेक करते हैं, राइट? कभी भी नोट करना, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, तो पूरा ऐसे शेक होने लग जाता है. तो वो इतनी फुल ऑफ एनर्जी होता है ना, इतनी एनर्जी होती है उस वक्त, तो उस वक्त आपको कुछ ध्यान नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं. और उसी का मतलब है कि जब आपने हॉट कोल ले लिया कि मैं दूसरे इंसान पे फेंकने वाला, ये सब कुछ लिटरल नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट इन द लिटरल सेंस, ये एक मेटाफर है. तो इसका कहने का मतलब कि आपकी उस वक्त वो सिचुएशन हो रही होती है कि आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि आपको खुद को नहीं पता है कि ये जो गुस्सा है ये आपको ही खुद को बर्न करने वाला है. दूसरे इंसान को नहीं फर्क पड़ेगा उस तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, दैट इज ऑन द अदर पर्सन कि वो आपका गुस्सा ले रहा है कि नहीं. समवन हु इज वेरी काम माइट नॉट इवन टेक योर एंगर, उसको आपके गुस्से से फर्क ही नहीं पड़ेगा. कोई जो काम नहीं है उसने आपका गुस्सा ले लिया, उसने भी आपकी एनर्जी ले ली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ओके, आइदर ऑफ द टू थिंग्स आर पॉसिबल, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, कि आप इतना गुस्से में हैं, आपको दिख रहा ही नहीं है कि वो जो गरम कोयला आप ले रहे हैं वो पहले आपको बर्न कर रहा है. इट इज ईटिंग यू अप. आई विल एक्सपैंड ऑन दिस मोर. प्लीज कंटिन्यू. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Yes. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's life are one of the most precious gifts you have. Look at your children
and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool of their life, gratitude. Or Sorry, no, just a second. no. Yeah. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. जो आपको उस कोयले से थोड़ा जल गया था हाथ में, जो जिसका दर्द भी आपको महसूस नहीं हुआ गुस्से से, ओके, योर लाइफ वाज बर्निंग बिकॉज ऑफ इट, बट ग्रैटिट्यूड विल एलिमिनेट इट. वो बोलते हैं ना, कोई और चैप्टर में था ना, ग्रैटिट्यूड इज एन एंटीटॉक्सिन, इट्स अ वैक्सीन, राइट, और इट्स एन एंटीटॉक्सिन. मतलब वो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीज से बचाता है. तो वो आपका जो वूंड है उस पे मलहम लगाता है कौन? ग्रैटिट्यूड, और वो पूरा वूंड चला जाता है उससे, राइट. सो नाउ अगर ये एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी का कोई एक्स पार्टनर है, बट आप बच्चों से उनसे कनेक्टेड है, लेकिन आपके पास उनके लाइक बच्चे भी है, राइट, और रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवन इज नॉट लकी, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई एक्स पार्टनर है, उनके साथ बच्चे भी है, बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एक्स पार्टनर से, तो look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for ex-partner. So your children that are there, whom you love so much, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, वो आपके एक्स पार्टनर ने ही दिए हैं, सबसे पहली बात. तो दूसरी बात, your children's lives are one of the most precious gifts you have. Obviously, everyone loves their children so much. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day. एक एक वर्ड ध्यान से पढ़िए. बोलते हैं हर एक दिन आपको धन्यवाद देना है अपने बच्चों की लाइफ के लिए. धन्यवाद किसको? एक्स पार्टनर को, क्योंकि उन्होंने वो बच्चे दिए, राइट. एज वेल एज ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी टू द रिलेशनशिप. थ्रू योर एग्जाम्पल यू विल बी टीचिंग योर चिल्ड्रन द ग्रेटेस्ट टूल फॉर देयर लाइफ. ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आप अपने बच्चों को सिखाएंगे कि चाहे कुछ भी हुआ, यू डिसाइडेड टू सेपरेट वेज, बट आपने फिर भी ये सिखाया कि नहीं, आई एम थैंकफुल टू माई एक्स पार्टनर फॉर वट एवर रीजन. सो आपने वो ग्रैटिट्यूड अपने बच्चों को भी सिखाया. ऑब्वियसली जैसे मॉम डैड होते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं, राइट. सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जो बच्चों ने देखा वो भी सीखेंगे. तो यू आर टीचिंग योर चिल्ड्रन अ वेरी द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन लाइफ, दैट इज ग्रैटिट्यूड. प्लीज कंटिन्यू. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. Continue. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I've ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Just a second. So it says, if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, okay, for whatever reason, अगर आपका दिल टूटा हुआ है या कोई रिलेशनशिप जो टूट गया है या टूटने की कगार पे है, तो ग्रैटिट्यूड आपको वो चेंज कर सकता है. एंड ग्रैटिट्यूड मैजिकली ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल पेन. नहीं, इट सेज
आप एक बात ध्यान रखिए, अगर वो बोल रहा है कि यू कैन यूज ग्रेटिट्यूड पावर टू ट्रांसफॉर्म योर पेन, इट्स नॉट सेइंग कि आपका रिलेशनशिप पहले जैसा वापस हो जाएगा, कि जुड़ जाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन नो, शायद आपको वापस वो रिलेशनशिप जोड़ना हो कि नहीं जोड़ना हो, या कुछ मूव ऑन करना हो, डिपेंड्स ऑन यू, पर आपका पेन नहीं रहेगा, यू वोंट बी इन पेन एनी लॉन्गर। ओके, सो जो ग्रेटिट्यूड है वो आपकी इमोशनल पेन को हीलिंग और हैप्पीनेस में टर्न करेगा फास्टर देन एनीथिंग एल्स। ओके, किसी भी और चीज से ज्यादा जल्दी। एंड देन शी गिव्स द एग्जांपल ऑफ हर पेरेंट्स who were very much in love with each other, and that's the most beautiful marriage that she's seen. लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली उनकी मॉम वाज नॉट वेरी ओके विद इट, लाइक जो भी she would be very sad of course, but after months of suffering, okay, जब कुछ महीने निकल जाते हैं तभी थोड़ा सा ये जनरली होता है ऐसा, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. वो ये नहीं सोच रही यार वो मुझे छोड़ के चले गए, either you can think like that कि मुझे छोड़ के चले गए, either जब वो स्टार्टिंग में होता है ये obviously, but later step by step you go on, you move on, and then you begin to realize कि लाइक जो आपका जो डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन, एक एक चीज वो ढूंढने लगी जिसके बारे में वो ग्रेटिट्यूड कर सकती है, ग्रेटफुल हो सकती है। ओके, पहले पास्ट के बारे में ग्रेटिट्यूड किया, शी रिकॉल्ड ऑल द वंडरफुल टाइम शी हैड रिसीव्ड थ्रू द डेकेड्स विद माय फादर, विद लाइक हर हस्बैंड। देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप एंड शी लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द फ्यूचर। वो ये देख रही है कि इनके ना होने से वो फ्यूचर में क्या होगा। ओके, जब अगर फ्यूचर में, पास्ट में उन्होंने अच्छी बातें ढूंढी, ओके, कुछ अच्छे मोमेंट्स देखे, प्रेजेंट में वो है नहीं, अब फ्यूचर में जब वो नहीं है तब क्या होगा। ओके, तो वो अच्छी बातें ढूंढने लग गई। One by one she found them. She found or remember things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step, opportunities to fulfill her dreams magically poured in. इसका मीनिंग क्या है? फ्यूचर में ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि कोई सोचता है कि मैं आपके बिना ये कैसे करूंगी, हस्बैंड नहीं है अब क्या होगा, बट व्हाट शी थॉट कि अच्छा हस्बैंड नहीं है तो मैं उसमें क्या फायदा, मुझे क्या हो सकता है, राइट। शी थॉट कि अगर जब वो नहीं थे तब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता था, मान लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए, मान लीजिए कुछ और चीजें करने के लिए, तो शी पुट हर एनर्जी इनटू दैट। उन्होंने चूज किया कि उनकी जो भी एनर्जी है वो उसमें लगाए, and her opportunities started to magically pour in front of her. Her life became rich with happiness again, and magical power of gratitude gave my mother a new life. उससे उन्हें एक नई लाइफ मिली जहाँ वो एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ सकती थी। सो आई वुड ऑलवेज टेल यू वन थिंग, मान लीजिए आपके पास कोई दो राह है, राइट, आगे फ्यूचर के लिए जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो यूज योर एनर्जी। ये एक डायलॉग है जिसको पकड़ के मैंने बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत खुशहाली लाई है। यू कैन से यूज योर एनर्जी नॉट टू वरी, मतलब चिंता करने के लिए अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स मत दीजिए, बट यूज योर एनर्जी टू बी ग्रेटफुल। ओके, सॉरी, यूज योर एनर्जी टू बिलीव, टू हैव फेथ, यूज योर एनर्जी इन फेथ। मतलब या तो आप फेथ रख सकते हैं कि आगे सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, एक अनवेवरिंग फेथ होता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, और एक होता है वरी कि क्या होगा आगे पता नहीं, राइट। ये दो ही चीजें पॉसिबल है। अब कोई भी चीज हमारी लाइफ में जो फ्यूचर में होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वरी अबाउट द फ्यूचर, आगे क्या होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है, बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आजकल बहुत सारा वरीज होता है दिमाग में। तो वो सब की बदले जो आप थॉट की एनर्जी दे रहे हैं वो फ्यूचर को, उसकी बदले आप बिलीफ की एनर्जी दीजिए, फेथ की एनर्जी दीजिए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। ओके, सो actually this came to me at a very right time. I was going to talk to my sister-in-law about something, ठीक है, मेरे को उनसे बात करनी थी, which was something that was I was not very sure कि वो उस चीज को अच्छे से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, how will she react to it, मुझे नहीं पता था। ओके, सो ऐसा बहुत बार होता है ना, हम सारे सिनेरियो सोच लेते हैं कि उनका कैसा रिएक्शन आएगा, फिर मैं क्या बोलूं, तो मैं मन में सोच रही थी। Then I thought, let me not think about all this, I'm just going to think one thing,
I'm just going to think कि वो जो मैं बात बोल रही हूँ वो उस बात को अच्छे से रिसेप्टिव तरीके, like she'll be receptive towards it and she'll take it in the most amazing manner that's possible. So there's nothing to worry about. I gave all my energy to have that faith. And trust me, ऐसा बोलते हैं faith moves mountains. So I've seen that in my life. जब आपके पास faith होता है ना कि नहीं सब अच्छा ही होगा, the universe will have to give that to you. There is just no option. Universe के पास नहीं option होता है. It just surrenders to you. And you know, एक और quote है famous that when you are calm, जब आप एब्सोल्युटली काम होते हैं ना, काम मतलब मन में कोई चिंता नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, देन द एंटायर यूनिवर्स सरेंडर्स टू यू. पूरी जो कायनात है वो आपके चरणों में आ जाती है. सरेंडर मतलब वो आपको सरेंडर कर देती है बिकॉज आप काम हो. तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर इन अ फिक्स, व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दैट, याद रखिएगा कि यू डोंट हैव टू वरी. अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए. डू मेडिटेशन, डू डीप ब्रीदिंग, अगर और कुछ नहीं तो 3 गहरी सांसें ले लीजिए. Just calm your mind and just believe that everything is going to be super fine. That's all it takes. Okay, and the entire universe will be yours. Just try this and let me know if it worked out. Okay, please continue. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a list of 10 things you're grateful for about the person you've chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things that you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about the good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said to you or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. Okay, just a second. So it says कि आज की प्रैक्टिस के लिए आज हम एक वो गरम कोयला देखेंगे कि हमें किसके पे मन करता है वो फेंकने का, लिटरल सेंस में नहीं, मेटाफर में. ओके, सो आज आप एक रिलेशनशिप चूज कीजिए जो प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा ब्रोकन है. हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं हो आपकी लाइफ में, बट फिर भी पास्ट में तो होगा कोई ना कोई. अगर आपके अब सब रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मैजिक बुक हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, फिर भी पास्ट में कुछ कोई ना कोई होगा. यू हैव टू थिंक अबाउट वन रिलेशनशिप. इट डजंट मैटर कि वो इंसान आपकी लाइफ में अभी है कि नहीं है, पास्ट का है, कि वो इंसान अभी जीवित भी है कि नहीं है, डजंट मैटर. ओके, सो सिट डाउन एंड मेक. आपको क्या करना है, पहले वो एक रिलेशनशिप ढूंढना है. ओके, उसके बाद आपको बैठ के 10 चीजें लिखनी है उसके बारे में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं. ओके, विच यू लाइक अबाउट दैट पर्सन. नाउ थिंक बैक थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप. जब जिस समय में आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ अच्छा था, तब क्या क्या होता था वो आपको लिखना है. मान लीजिए कि आप बहुत बहुत उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपने, तो यू कैन राइट दैट आई लव हाउ वी यूज्ड टू गो टू द मूवीज. I love how he used to care for me. He used to get me popcorn, or he used to get me whatever I used to like. I love how we went shopping. Okay, I'm so thankful that he took me shopping. या ऐसा कुछ अगर है नहीं आपकी लाइफ में, देखिए the easiest way to do this is to think back to the things were before the relationship. Okay, हाँ, ये हमने पढ़ लिया. और अगर मान लीजिए कभी अच्छा ही नहीं था, कि स्टार्टिंग से ही बुरा था, आपकी शादी हुई और मान लीजिए कि स्टार्टिंग से आपकी किसी के साथ बनती नहीं थी, देन ऑल्सो उसके बावजूद आपको उस इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई दिख जाएगी. सो दिस मैजिकल प्रैक्टिस, ये नहीं पढ़ा है हमने, राइट केसी? Yeah. No. Yeah, we have read until here. Please go ahead. The magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do,
you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is a gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by the name, and express your sentence in gratitude. Dash, I'm grateful. Name, I'm grateful for what? Paul? Just a second, Casey. Sure. तो ये जो प्रैक्टिस है, इसमें आपको ये नहीं तय करना है कि कौन सही है या कौन गलत है. ओके, ये उसके बारे में प्रैक्टिस नहीं है. आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, क्या हो जाएगा, जैसे मार लिया होगा, गाली दे लिया होगा, नो, ये सब आपको नहीं सोचना है आपको अभी. लेकिन आप वो रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं. एंड आपको उस इंसान की जरूरत नहीं है. इसलिए बोला कि चाहे वो पास्ट में है, आपका उनसे कांटेक्ट नहीं है, चाहे वो जीवित भी ना हो, लेकिन आपको वो इंसान की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए. नाउ शी इज सेइंग देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, इवन द डिफिकल्ट वंस. अगर बहुत ही मुश्किल मान लीजिए है ये आपका रिलेशनशिप, तो भी देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप. मतलब हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा, एक दो चीज तो अच्छी होती ही है. सो जैसे जैसे आप और देखते जाएंगे, यू विल फाइंड कि आपको कुछ एक दो चीजें अच्छी मिलेगी. तो आप उसके बारे में लिखिए. एड्रेस द पर्सन बाय नेम, आप उसका नाम भी लिखेंगे आज, और अपने ग्रेटिट्यूड में एक्सप्रेस करेंगे. कैसे? जैसे मान लीजिए पॉल, इन्होंने एग्जांपल लिया है, पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट. सो ये कैसे, आई जस्ट रीड दिस ahead so I can explain also. Sure. Or just read out a few and then I'll explain. Okay. Number 1, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number 2, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Number 3, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day couldn't be without you. Number 4, Paul, I'm grateful to you for the hard work and the long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Number 5, Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Okay, I'll just explain this. Okay, so now जब उन्होंने पॉल को लिया है, तो वो बोल रही है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर अ टाइम टुगेदर. जितना भी समय स्पेंड किया, दैट इज ओके. जब जितने टाइम उनकी लाइक while our marriage did end, ठीक है, कोई बात नहीं, शादी तो खत्म हो गई, लेकिन बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ she was wiser, and और जो भी लर्न किया वो दूसरे रिलेशनशिप्स में उन्होंने यूज किया. देन शी इज सेइंग कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डिड टू ट्राई एंड मेक अ मैरिज वर्क. अगर 10 साल उनकी मैरिज चली है, मतलब कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डाले होंगे ना चलाने में, ठीक है, दिस इज व्हाट शी सेज. तो उसके लिए धन्यवाद. अब कोई एक्स हस्बैंड में क्या ढूंढेगा, राइट, कि मैं क्या ढूंढूं उसमें. एक होता है हमेशा उनको ही ब्लेम करना कि मैरिज टूट गई, ये हो गई, और एक होता है कि आप उनके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल है. सबसे पहले तो आपने बोला कि जितना समय आपके साथ स्पेंड किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है, लर्न अ लॉट, यू मेड मी वाइजर. दूसरा उन्होंने कहा कि तुमने एफर्ट्स डाले इसलिए 10 साल टिका, तो उसके लिए धन्यवाद. तीसरा उन्होंने कहा आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर अ चिल्ड्रन, कि उन्हें बच्चे दिए. द जॉय आई रिसीव फ्रॉम देम एवरी डे कुड नॉट बी विदाउट यू, ये बच्चे उनके बिना हो ही नहीं पाते थे. फोर्थ, कि वो जैसे फैमिली को सपोर्ट करते थे, क्योंकि अगर इतने सारे लोग जो भी, मतलब बच्चे और वो 3-4 लोग या शायद और भी लोग जो भी फैमिली में थे, उन पे डिपेंडेंट थे, उनकी इनकम पे डिपेंडेंट थे, तो ही वाज वर्किंग फॉर देम. ओके, दैट इज फोर्थ. नाउ फिफ्थ,
जो जितने सारे मोमेंट्स बच्चों के साथ स्पेंड किए, इतने अनगिनत मोमेंट, उनको चलते फिरते लाइक चलते हुए देखना, द फर्स्ट स्टेप द और द फर्स्ट वर्ड स्पोकन बाय द चाइल्ड, वो ये इंसान ने देखा, लेकिन द हस्बैंड कुड नॉट गेट द चांस, राइट, बिकॉज वो सेपरेटेड थे. तो शी वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल. नाउ 6, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. जो भी टाइम था उसमें उन्होंने अगर सपोर्ट किया तो उसके लिए ग्रेटफुल. Now, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. 10 साल में कुछ ऐसा भी समय आया होगा जब वो बीमार पड़ी होगी और उनका ध्यान रखा गया होगा हस्बैंड ने, तो उसके लिए धन्यवाद. 8, Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. बहुत सारे समय ऐसा होगा जो अच्छा समय होगा, उसके लिए धन्यवाद. 9th, Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. At least उन्होंने एकदम वो नहीं कर लिया कि I'm not a father to your children and मेरे को बच्चों से नहीं मिलना है, ऐसा बहुत कम होता है. तो yes, उसके लिए grateful. 10th, Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much as they do to me. क्योंकि वो बच्चों से अभी भी मिलते रहते हैं, तो उनका सपोर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, इसके लिए धन्यवाद. कितनी सारी चीजें उन्होंने छोटी 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 ढूंढ ली, राइट. चाहे वो एक ही बात को टाइम स्पेंड किया या बच्चों से रिलेटेड, खाली बच्चों का में उन्होंने 4 पॉइंट ले लिए. तो यू कैन बी लिटरली ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग एंड ट्रस्ट मी. व्हेन आई रीस्टार्टेड दिस बुक, मतलब आई बीन डूइंग दिस 10-11 साल से, जब से मतलब सीक्रेट रिलीज हुई तब से 2011 से आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड यूजिंग द सीक्रेट, देन मैजिक केम एंड एवरीथिंग. बट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड डूइंग दिस नो, जब शादी के बाद मैंने ये बुक्स वापस रीड की थी, तो कोई एक ऐसा रिलेशनशिप था जो इतना क्लोज नहीं था मेरे, मतलब दूर का था, बट आई वांटेड टू मेंड दैट रिलेशनशिप. बट स्टार्टिंग में कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग से ही वो खराब रिलेशनशिप था, तो I couldn't write one gratitude also. जब ये चैप्टर आया and I wanted to mend that relationship because it meant a lot but it was not very close. I wanted to mend it और मुझे एक भी चीज नहीं मिली gratitude की. पर धीरे 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 मैंने सोचा क्या मुझे अच्छा लगता है, मैंने सोचा उस इंसान में मुझे क्या पसंद है. Trust me, she is a girl and I can't name her of course, बट मुझे मेरा और उनका कभी टाइम हमने टाइम अच्छा स्पेंड किया नहीं. We were always either we always had cold war. तो ऐसे इंसान के बारे में आप क्या लिख सकते हैं. Then I wrote down things like she was very beautiful. I wrote down things like whenever she goes shopping she gets something from me. I wrote down things like she makes everyone laugh. I wrote down things like she's very beautiful, so looking at her I get some fashion inspiration. She always talks nicely about my business even though हमारे बीच में इतना कुछ ठीक नहीं है, तो भी she always talks to me with respect. इतना जो भी कोल्ड वॉर है, लेकिन मुझसे बात अच्छे से करती है, कभी भी मुझसे गलत व्यवहार नहीं किया. फिर उनके कारण घर का माहौल अच्छा रहता है, एक एनर्जी अच्छी बनी रहती है, जो भी हम कहीं पे भी मिलते हैं या करते हैं. तो शी डज एवरीथिंग. मुझसे पटती हो कि नहीं पटती हो, बट एनर्जी अच्छी रहती है. सो ऐसी छोटी 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 बातें उनकी जो अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है कि नहीं डजंट मैटर, बट उनकी बातें जो अच्छी है वो मैंने ढूंढी और वो मुझे मिल गई, राइट. तो आपको अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन राइट इन द चैट और यू कैन टेल अस कि ऐसा रिलेशनशिप है और मुझे एक भी चीज नहीं मिलता उसके बारे में, तो वील हेल्प यू आउट. ओके, यू कैन थिंक अबाउट इट, बीच में भी कर सकते हैं चैप्टर के या चैप्टर के बाद. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसके बारे में आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो वील हेल्प यू आउट. ओके, प्लीज कंटिन्यू. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because your life has a life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward that person anymore. Okay, so what it says is sorry, जब तक ये पॉल वाली जो लिस्ट खत्म की ना, तब तक ये वो इंसान को लगा होगा कि हाँ यार इतना बुरा तो नहीं है. जैसे अब मैंने आपको पहले स्टार्ट की एक स्टोरी की, कोई थी मेरे लाइफ में जिसके बारे में मुझे लिखना था,
लेकिन जब मैंने लिस्ट किया तभी से आपको फील होने लग गया ना कि हाँ इतना बुरा तो नहीं है, कुछ तो अच्छाइयाँ है उस इंसान में। वैसे ही जब आप लिखेंगे तब आपको बाय द एंड ऑफ योर लिस्ट यू विल स्टार्ट टू फील मच बेटर। और अल्टीमेट पॉइंट अपन को कहाँ पहुंचना है, जहां हमारे मन में कोई बैड फीलिंग्स नहीं हो उसके बारे में। इट इज योर लाइफ दैट इज हार्म्ड बाय दोस फीलिंग्स, इसलिए हमें वो बैड फीलिंग्स, जितने भी हमारे अंदर जो विकार है, बुरे विकार है, हमें वो सब हटाने हैं। That is why we are taking that relationship and removing ourselves of all the bad feelings that are inside us. Okay, so every relationship is different, and if need be, आप ये कई दिनों तक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार से लिखने में मेरे अंदर से सारी बैड फीलिंग्स नहीं गई है, आई एम फीलिंग बेटर बट नॉट एज मच एज आई वुड लाइक टू बी, सो यू कैन डू दिस फॉर 3-4 days और मे बी इवन मोर। ज्यादा दिन तक कीजिए, मैंने बहुत दिन तक किया था फॉर द सेम पर्सन, तो मुझे रोज मिलती गई। कैन यू इमेजिन, जो फर्स्ट डे पे मुझे एक अच्छी चीज नहीं मिल रही थी, आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड एवरी डे आई कुड फाइंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, and every day I saw my relationship also got better, and today I am at a point where I share everything with her. I have the best relationship with her. Can you imagine it? मेरे को खुद को बिलीव नहीं होता है, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि today when I think I never knew I could have such a beautiful relationship with her, because first I let go of all my feelings जिसमें उनकी जरूरत ही नहीं थी, मेरे अंदर से मैंने फीलिंग्स हटाए। धीरे धीरे I started to be grateful for that person, and now I have such a beautiful relationship, it means the world to me. Okay, so that kind of friendship I have with her. Yes, you can have it too with whoever, whatever kind of relationship. I have never imagined like that. मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मैंने सिर्फ वो रिलेशनशिप को सही करना चाहा था, लेकिन अब वो सही नहीं है, वो बहुत ही अच्छा हो गया है। प्लीज कंटिन्यू। If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. Yes, so अगर आप ग्रेटिट्यूड के मैजिकल पावर को यूज करना चाहते हैं कोई भी करंट रिलेशनशिप में, आप देखेंगे कि धीरे धीरे मिराक्युलसली, मतलब आपको लगेगा कि कोई जादू हो रहा है, दूसरे इंसान में कुछ अलग बदलाव आया है, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कोई चेंज आया है, जबकि मैजिक आपने किया है। बिकॉज वी आर रीडिंग दिस बुक, एक ही इंसान की जरूरत है जो ये बुक को ये प्रैक्टिसेस को करे, एंड यू बी दैट पर्सन, बिकॉज बेनिफिट्स भी आपको ही ज्यादा होंगे। आपके अंदर से कुछ बुरा निकल रहा है, सो यू क्रिएटिंग स्पेस फॉर मोर गुड स्टफ टू बी इनसाइड यू। It takes only one person, and let that one person be you. Okay, continue. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationship in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. Yes, so if you choose कोई अपने पास रिलेशनशिप चूज किया है जिसके साथ आप कांटेक्ट में नहीं है, आपको इतनी पीस और हैप्पीनेस मिलेगा, ट्रस्ट में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा वो इंसान के साथ। शायद वो जीवित हो ना हो, वो आपकी लाइफ में अभी हो ना हो, वो पास्ट में होगा, लेकिन आपको बहुत ही पीस और हैप्पीनेस मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम यू विल सी अदर करंट रिलेशनशिप, और क्योंकि आपका वो रिलेशनशिप वो बैड फीलिंग्स जा रही है, वो रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, चाहे वो इंसान है कि नहीं है, पर आपके दूसरे रिलेशनशिप्स को भी उससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ओके, नाउ इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में भी कोई आपको चैलेंजेस आए ऐसा, तो इमीडिएटली वो प्रैक्टिस यूज कर दीजिए। यू विल स्टॉप द डिफिकल्टीज बिफोर दे गेट एनी बिगर, एंड इंस्टेड यू विल इंक्रीज द मैजिक। ओके, सो नाउ दिस इज माय सीक्रेट, दिस इज व्हाट आई डू। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बट कुछ भी ऐसा लगता है ना मुझे कभी कि कुछ चैलेंजिंग हुआ है, what I do, I just come in my room, I just write 10-15 gratitude for that person, and I go back. उससे क्या होता है कि कुछ खराब भी होने वाला होता है ना, थोड़ा चैलेंजिंग ऐसे लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग द राइट वे, तो वो थम जाता है, मतलब एक बार के लिए, एंड एवरीथिंग बिकम्स फाइन अगेन। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन योर एवरीडे लाइफ। आपके फ्यूचर में भी कभी ऐसा कुछ हो, जस्ट राइट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन।
और एटलीस्ट थिंक अबाउट इट. इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि आप वही कॉन्वर्सेशन में हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, internally अपने दिमाग में think about the gratitude for that person. Okay, so that is one thing. One more thing I wanted to share with you guys. जैसे हॉट कोल होता है, राइट, वैसे ही जब हॉट कोल होता है तो उसके पास इतनी पावर है कि वो हमारे हाथ को जला दे. और ये मेटाफर है, इसका कहने का मतलब कि किसी इंसान ने ऐसा कुछ कहा जिससे आपका दिमाग पूरा हिल जाता है, राइट, एक बुरी एनर्जी हमारे में आ जाती है. सो what I have done is I don't give the power of my mind to anybody else. मतलब किसी और को मैं इतना पावर नहीं देती कि वो मेरे माइंड पे रूल कर सके. मान लीजिए कोई छोटी मोटी बात में मेरी अपनी मम्मी ने मुझे कुछ बोला, एक नॉर्मल बात बोली जो मुझे अच्छी नहीं लगी, या किसी ने भी, हस्बैंड ने बोला, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आई हैव सिस्टर्स इन लॉ, बहुत सारे लोग हैं घर में, कोई बच्चा है जिसने कुछ बोल दिया, ठीक है, किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, स्टाफ है जिसने भी बोल दिया, बट आई डोंट गिव दैट पर्सन पावर ओवर मी. मेरे पास ज्यादा पावर है उसको ठीक करने का, उसको नहीं लेने का. इफ आई डोंट रिसीव दैट, देन दैट पर्सन हैज नो पावर एट ऑल. मान लीजिए किसी ने मुझे बोला तुम एकदम बेवकूफ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस बात का, बिकॉज अगर मैंने वो चीज को ले लिया कि हाँ मैं, इसने मुझे ऐसे कैसे बोला, दैट मीन्स दैट आई एम माइंडिंग दैट. एंड अगर वो मैंने हंसी में उड़ा दिया, उस बात को ध्यान ही नहीं दिया, दैट पर्सन विल ऑल्सो उसको ऐसा लगेगा कि इसको फर्क ही नहीं पड़ा. एंड ये बातें आपकी लाइफ में एकदम खत्म हो जाएगी बिकॉज आपको फर्क नहीं पड़ रहा. अगर आपको फर्क पड़ा, दैट मीन्स यू आर गिविंग मोर एनर्जी टू इट, एंड मोर सच एनर्जीज विल कम इनटू योर लाइफ, अनडिजायर्ड एनर्जीज. चाहे सेम चीज ना होगी, बट आप एक अनडिजायर्ड एनर्जी को फोकस कर रहे हैं. सो दैट इज वाई डोंट फोकस ऑन सच थिंग्स, इनफैक्ट बी स्कैर्ड ऑफ इट. ओके, जैसे ही ऐसी कोई बात होती है जो अनडिजायर्ड है आपकी लाइफ में, ये मुझे राजन सर ने सिखाया था कि कोई भी अनडिजायर्ड एनर्जी है उससे आप डरे और उसके बारे में सोचे ही नहीं. दिस इज व्हाट ही टॉट मी, एंड आई हैव केप्ट दिस विथ मी फॉर एवर. आई मीन इट्स एन अमेजिंग एनर्जी. आप कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, बिल्कुल भी नेवर एवर जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट. कुछ ऐसा कोई भी रिलेशनशिप में हुआ ना, जस्ट इग्नोर इट. किसने कुछ गलत किया, plain simple forgive that person. You don't want to carry that energy into your life. And इसी चीज में आप ये भी सोच सकते हैं कि I don't give the power of my mind to anyone. My mind is stronger than whatever you said. किसी ने कुछ भी बोल दिया, आप ये सोच के रखिएगा, doesn't matter. Your mind can take it. Okay, please continue. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Okay, I want to share one incident. So what happened? Thank you so much, Casey, for reading. Thanks a My lot. pleasure. You read very well. You know My that, pleasure. and I love Thank it when you read it. Yes, thank you so much. Okay, so I want to share one incident with you guys. So what happened is, कुछ ही समय पहले I was sitting at a place, और जहाँ से मुझे दूसरे इंसान दिख नहीं रहे थे, सुन रहा था, but दूसरा the other two people, they could not hear, like they didn't know that I was sitting there and having my lunch. And वो lunch करते करते, because I was having lunch, so I was feeling कि I was not talking, and मैं चुपचाप बैठी थी, तो उन लोगों को नहीं पता पड़ा कि I was sitting there, and those two people were bitching about me, like they were saying something bad about me. But as soon as I heard, क्या होता है ना कि आप इतने गुस्से में आ जाते हो, या तो आप उनके पास जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमको गलत लगता है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आप मेरा नाम क्यों लगा रहे हो, समथिंग लाइक दैट, जनरली एक ऐसा रिएक्शन हमारे अंदर से आता है. बट व्हाट हैपेंड इज,
I was having lunch. I didn't want to say such things during lunch. मैंने क्या किया, मैंने धीरे धीरे मन में सोचा कि लेट मी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द टू पीपल. मैंने कुछ तो गलत किया होगा दैट आई अट्रैक्टेड दिस एनर्जी इन माय लाइफ. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन दैट एनर्जी और उसके साथ बहने में कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने क्या किया कि मैंने कुछ गलत किया होगा. आई टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. आई स्टार्टेड डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर द टू पीपल एंड स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शायद मेरी गलती है कि नहीं. आई वॉज नॉट एट फॉल्ट, मेरी कुछ गलती नहीं थी, बट आई स्टिल टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. And while I was having lunch, उसी conversation में, can you imagine, I heard those people completely, उन लोगों ने दोनों ने turn कर दिया अपने आप को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा. And they were very sure by the end of the conversation कि नहीं, मैं गलत नहीं थी, मैं एकदम सही थी. How does this happen? क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुराई करना चालू करते हैं, आपको पूरा विश्वास है किसी ने कुछ गलत किया है, तो वो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में तो आप चेंज नहीं हो सकते ना. आप कुछ गलत ही बोलते जाएंगे और उसमें 4 चीजें ऐड करेंगे, सोचेंगे ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी था, फिर भी उसने ऐसा किया. बट क्योंकि आई वॉज डूइंग ग्रेटिट्यूड इन माई माइंड, आई वॉज लिसनिंग टू देम, दे वरंट बी एबल टू लिसन टू मी. वो पूरा कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया बिकॉज ऑफ माई ग्रेटिट्यूड. आई मीन दैट वॉज द मैजिक दैट आई सॉ दैट डे. बहुत ही रिसेंटली हुआ ये मेरे साथ एंड इट वॉज वंडरफुल. ऐसा पहले कई बार हुआ है, छोटे रूप में किया, बट दिस टाइम व्हेन आई डिड इट, it was so wonderful. I was like, I really wanted to share this. And I'm sure instead of getting angry or getting upset कि ऐसा क्यों हो रहा है, you can use your energy to believe and change it. Okay. So yes, what is our magic practice? Number 1 is count your blessings. Last 4th is the rock one. Second, आज आपको एक relationship choose करना है. Okay. Don't choose 2, 3, 4, just one. A lot of people have this question, but just one. Third is sit down, write a list of 10 things for that person. और किस format में लिखनी है, पहले इंसान का नाम. Then I am grateful for whatever you're grateful for. Okay, this is what you have to do today. We are done with today's chapter, and if you have any questions, just be free and ask. आपको कुछ भी चैप्टर में समझ नहीं आया, कोई भी डाउट्स है, प्लीज आस्क. You want to share anything, please ask. Amazingly done, Mahima. A lot Thank you so much, Nikhil. So अब मैंने जैसे मेरा I talked to Rajan sir a lot during my week, my month. So मैंने उनसे काफी चीजें, जैसे इस बारे में हम बात करते हैं कि हमारे को रिएक्टिव नहीं होना है सिचुएशन को लेके. इट इज जो हमारी एनर्जीज है, जो हमारी वाइब्स है, बहुत प्रेशियस हैं. सो इफ समवन इज आर्ग्यूइंग, कोई आर्ग्यू कर रहा है, हमारे पास 2 + 2 7 है, हाँ भाई 2 + 2 7 है. फॉर मी इट इज सो प्रेशियस कि भाई मैं तेरे साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकता कि मैं अपना 2 + 2 4 तक को समझाता रहूं बैठ के. इफ यू आर सेइंग 2 + 2 is 7, आई एम ओके विद इट. क्योंकि जब आप ये जर्नी में आ जाते हैं ना, आपकी मैच्योरिटी इट हैज टू इंक्रीज. आपको बहुत कम रिएक्टिव होना है, आपको बेसिकली आपको क्रिएटिव होना है. And then it will come with more happiness. You'll get more happiness. You'll be more centered in your life. Yes, if you have any questions. तो निखिल ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि रिएक्टिव नहीं होना. Actually summed up what I was saying. If I was reactive at that time, जो मैंने इंसिडेंट आपको सुनाया, it could have ended in a very wrong thing. But I took responsibility of it and I started to do something else. So very nice, Nikhil. Very nicely put. Let us take questions. Pallavi ji, please unmute yourself. Can you hear me? Yes. Okay. As you talked about a relationship, so in this, do we have to call that person and say something like, or to be grateful for him, or just write in the copy and leave it? Or can we not just communicate? Communication is not important in this. In the entire chapter, there's nothing written about communication. As I have mentioned, you don't have to communicate with that person at all. आपको उसको कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है. आपको मैंने एग्जांपल दिया कि मैं मन में ही ग्रेटिट्यूड करने लग गई. Yes, so today's chapter has nothing to do with communication, dear. And can we just keep away from that relationship since we have some problems? Abhi you have a problem na, but the entire practice is about removing that problem. So for now you can stay away,
बट जब तक आपके मन से वो बैड फीलिंग्स नहीं निकल जाए ना, अब धीरे धीरे आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आपके मन से वो बैड फीलिंग्स निकल जाएगी, फिर हाउएवर इट गोज। जैसे मैंने आपको एक बीच में बताया था ना कि जो रिलेशनशिप मैंने चूज किया था, मुझे कुछ उनके साथ सिर्फ ठीक करना था रिलेशनशिप, मुझे कुछ उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं करना था, बट धीरे 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 अपने आप वो इतना अच्छा हो गया कि नाउ शी इज ऑलमोस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। सो दैट विल हैपन। ओके, सो डोंट वरी, अभी उसके बारे में आप टेंशन नहीं कीजिए, अभी जस्ट डू ग्रेटिट्यूड फॉर सम टाइम। लिखते रहूं उसको, I'll just keep on writing good things about him. Yeah. Okay. Thank you. Yes, thank you. Yes, Usha ji. Usha ji. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, I would Hi. like to ask you just now, you said about to be in gratitude. And then I think one sentence was there in that book also, that everything you do is in gratitude. And then like, जैसे कि हमको काम चाहिए, okay? We want some work. And then should we take an action also? I mean, besides saying gratitude to our workplace previously and now, and then should we take an action? How to take an action? Like sending email, जैसे कि उसमें इस book में भी लिखा है कि you have to take an action, not only gratitude, right? I mean, to get something in for our desire. So how would you bring about it? I mean, so your desire first thing, is okay. So this question is firstly not regarding the chapter. It's okay. We'll still take it. Huh? Hello. Hello. Yes. Yeah, So yeah. your desire is to Hello. get a new work, right? You want a new job. Yeah. Yes. So apart from giving gratitude to your old job, you have to keep taking action. I'll tell you how. You're saying you have to send emails. You have to keep checking the newspaper. You have to keep checking whatever sources that are there where you will find work from. You have to, like, acting is always there. You have to act upon it. जो भी आपका काम है, whatever is required from your side, you will have to do that. Now we all know how to lose the weight that is on our body, but just being grateful about it. But still, you will have to exercise भी करना पड़ेगा, कम भी खाना पड़ेगा, whatever it is to be done by you, then only you will achieve that. So apart from that feeling part, that acting act part has to be there for sure, no doubt about it. Okay, Thank you. okay, so I can share one thing. So my old secretary, my personal assistant, so I was very very grateful to her. She has left me थोड़े time पहले, and I was looking for somebody, but I was not sure should I appoint or not. So I was very grateful to that person. She has helped me a lot, even though she left me very abruptly, but I was still grateful. Now yesterday I got a call from somebody who studied from Paris, and she's like, ma'am, I really like your brand. I would like to intern under you. I am this, I am that. उसको बहुत सारी चीजें आती थी. She's multi-talented, okay? And I was a little fearful in my mind that yeah, ये कुछ ज़्यादा ही qualified है मेरे job के लिए. So how much is she going to charge? She's like, ma'am, but I need one favor from you. For the first month, I am not charging you anything. I'll be doing it for free. Second month से I'll see. तो मैंने बोला second month से how much? So she's like, 5 is okay for me because I'm not doing this for money. I just want to intern under you. You have such a nice brand. And I was so shocked. She's overqualified for the job that she's doing. She's really amazing. She's doing 1 month for free. Second month से I was paying my secretary 15,000 last secretary थी उसको, and I was like कि ये 30 बोलेगी 40 बोलेगी कितना she'll quote. She quoted 5,000. So why did that happen to me? I was so joyful, I cannot tell you, because she's such a nice person. Okay, I've been speaking to her lately because I've been so grateful to all my previous secretaries. 2-3 of them were there. That is why she came into my life, and now she's almost doing it for free. 5,000 is nothing for me. Like when giving it, 15 is still when इतना काम नहीं होता है जितना 15 का, but वो जितना work मुझे already दे रही है उतना 5 का job तो मैंने उसे already करवा लिया है. So that is how you have to be grateful. Yes.
there are two questions here. So one is, I've gotten a direct DM from somebody. I'll read out the question. I hope your thing is answered, Usha ji. Yeah, thank you so much. Okay. The question is, can you please guide on how to take responsibility and ask forgiveness from the person with whom relationship is not perfect as desired? Okay. So now, ye aapko, you like, in my belief, Nikhil can also answer this if he wants. In my belief, what I would do is, जैसे मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिया था लंच का टाइम का, so टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? मतलब कि मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहे हैं। मतलब मैंने टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैंने ये क्यों अट्रैक्ट किया, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी? इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया होगा। So that is how I took the responsibility. And asking for forgiveness with whom relationship is not perfect, वो मैंने कैसे किया? Grateful होके, simple. You don't ask for that, like you don't go to that person. जैसे ये चैप्टर किसी शायद कोई इंसान जीवित भी ना हो या उससे कांटेक्ट में ना हो, उसके बारे में भी है, तो उससे आप कैसे कांटेक्ट करेंगे ना? So you don't have to contact that person. You don't have to literally ask for forgiveness. आप अपने मन में जब इंसान को forgive कर देते हैं, तो वो forgiveness की भावना उस तक पहुंच जाती है. And universe will do something to, you know, make you meet that person. And even if you're not meeting that person, then you will at least, मतलब वो bad feelings पूरी चली जाती है and एक forgiveness की भावना रहती है. This is how I'd like to answer it. If you're okay with the answer, you can tell me in the DM, or if not, then I can expand more on it. Nikhil, would you like to add anything? No, you have answered it. Like that's what I do as well. So no further that we can add on to it. Yes, let's see if he is satisfied with the answer what you have said. Okay, great. Yes, she is satisfied. Okay. Now next question from Amit says, as you said, one relationship today to be focused upon. Can we continue this practice for another 2-3 days to heal all such relationships with one relationship every day? Dear, this practice, you know, all this work, it takes a lot of internal work. It's not as easy as it sounds. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रोज में एक रिलेशनशिप कर दूंगा, you can do that. It's not so difficult as well. लेकिन अभी आप एक रिलेशनशिप के लिए कीजिए, उसको 2-3 दिन कीजिए. अब हर दिन एक न्यू रिलेशनशिप मत लीजिए, राइट? तो यू कैन डू दैट. अभी आपने एक रिलेशनशिप पहले पकड़ा, उसको 2-4 बार कीजिए, पूरा मन में से उसके लिए विकार निकाल दीजिए, देन होल्ड ऑन टू सम अदर रिलेशनशिप. ओके, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. निखिल, डू यू हैव एनीथिंग टू से? यस, आई वुड लाइक, मैं इसमें आपको ये बोलूंगा, देखिए ये जो प्रैक्टिस है ना, आपको अपने साथ करनी है. बेसिकली ये नहीं है कि निखिल यू आर ऑन म्यूट. कि ये नहीं है कि आपने 28 डेज कर लिया तो क्या कहते हैं ये खत्म हो जाएगा. इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस जर्नी. मैं एवरी डे आई प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 7-8 असाइनमेंट्स एवरी डे. दैट्स व्हाई आई सी सो मेनी रिजल्ट्स. क्योंकि ये बेसिकली आपका बीइंग हो गया एक तरीके से. जैसे आप यू टेक योर एवरी डे जो आप स्केड्यूल करते होंगे, अपने ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, सो पुट इट इन अ स्ट्रक्चर. आप उसको एज अ अपना हैबिट बना लीजिए असाइनमेंट्स को करने के लिए, जिस भी एरिया में दिखे आपको. बिकॉज दिस, एज आई सेड, पहले मैंने बोला कि एक हीलर की तरह काम करती है ये बुक. जिस भी एरिया में आपको कुछ भी ब्रेकडाउन नजर आता है, इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट. ग्रैटिट्यूड देना है, दैट इज अ डेली प्रोसेस. सो आप कंटिन्यूसली करें. जैसे महिमा ने भी बोला कि यू मे फाइंड के भी एक ही दिन में शायद आपका रिलेशनशिप हील हो जाए, तो देन यू मूव ऑन टू अदर थिंग. बट अगर नहीं लग रहा तो ऐसे नहीं है कि आपने आज एक पे कर लिया कल दूसरे पे कर लें. गिव इट सम टाइम. आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको बेसिकली प्रैक्टिस में लाने के लिए. एंड वंस इट बिकम्स, तो आप उसको डेली बेसिस पे यू कैन ट्राई इट. जैसे मैं बताया कि मैं 5-7 एक्सरसाइज रोज कर लेता हूँ इसके अंदर से. सो व्हेन यू गेट मोर प्रोफिशिएंट विद दैट, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग दैट एज वेल. Yes, great. Okay, any other question? Mamta ji has something to say. Yes, Mamta ji. Yeah, hello, good morning. Good morning. Ma'am, actually, it really works a lot. We can't hear you, Mamta ji. Can you be a little louder, please? Is it okay now? Yes. Yeah, better.
Okay, actually, ma'am, it really works because मेरा college में एक ऐसे relationship था which like I almost break up with one of my classmate. But आज 18 साल बाद I did this practice maybe एक 4-5 महीने पहले किया था जब मैंने ये book पहली बार पढ़ी थी. It really worked. And उसने सामने से when he met me, he really spoke to me and I was very, I mean, it was a miracle for me. वो एक ऐसा इंसान था जो he was like very egoistic person या कुछ भी वैसा था, but then I mean like it was a miracle for me. Wow. I just wanted to share this. And That ma'am, is so अब amazing. ऐसा है कि I have no grudges for anybody कि like मेरा relationship किसी के साथ ऐसा नहीं है कि मुझे I have to do it perfect because I'm कोई भी कैसे भी हो I'm good with everyone. So I just wanted to know कि like अब ये exercise के लिए what I have to do. या भी मे बी कोई प्रेजेंट का कुछ एक ऐसे चल रहा है जो ओके है, क्या हम उसको लेके कुछ लिख सकते हैं? Yes, why not? Okay. Definitely. Yes. Okay. So Mamta ji has made a very nice point. She is like कि जिस इंसान के साथ उनका एकदम अच्छा हो गया तो वो इंसान बहुत ही egoistic है. So now this is a learning from for other people कि कितना भी egoistic कोई भी हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं होने वाला, पर उससे फर्क नहीं पड़ता है. कैसा भी कोई इंसान है वो आपके साथ अच्छा हो जाएगा because of your feelings. So she has conquered that and she is sharing it, with such a beautiful smile that it's possible. It is possible. Seriously, I would really like to say to everyone कि जिनको भी लगता है कि भाई मेरा past कैसे भी रहा हो या फिर वो relationship अब work नहीं करेगा, I request everybody please ये practice दिल से कीजिए. It will really help everyone. Wow, thank you so much. That was very inspiring, Mamta ji. Yes. Thank you. मेरे नहीं तो उनके बोलने से, लेकिन आप please definitely do this. नहीं आपके बोलने से seriously है. Thank you so much. Thank you so much. Yes, Neha ji, we can do the Ho'oponopono technique definitely. But today, do we have Sarita ji, Nikhil? Yes, she is there. So let us start, or you wanna wait for some time? No, let's start. I just want to make a small announcement. Dimple told me to do that. Ma'am, Ashwin ma'am is there in Mumbai. So people who are interested in meeting her, they're planning a get together on Sunday. So we have already posted a message. हमने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपने कंफर्मेशन के लिए, so that the place can be booked. Yes, so all of you have to put in one group. कोई भी एक ग्रुप में आप अपना नाम डालिए. अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर आ रहा है उसका नाम डालिए. And so that is how we will come to know the number of people. We still don't know the number of people कि 20 जने आने वाले, कि 100 जने आने वाले, कि 200. So please put your name and just confirm that you're going to be coming. The charge would be around 1200 per person. By chance अगर वो कम होता है तो we will respond to you later. But for now it is 1200. The venue is still to be decided because we don't know the number of packs. Okay, number of people. Yes, Nikhil, anything else? No, that's what I would like to share. And Sarita ji, if you are there, you Yes. can. Just a second, huh, Nikhil. I think Usha ji has a question. And किसी ने लिखा है, is it possible to do Zoom meeting with ma'am? I think they have a provision जहाँ पे वो Zoom meeting चालू करने वाले हैं. So this is what Rajan sir has thought, but we don't know if that will be there or not for sure. Okay. Yes, Usha ji, please ask your question. Yeah, my question was the same also, if she can hop in the Zoom meeting for certain period of minutes of time. All right. Yeah. Thank you so much. You. Nikhil, please take over. I'll just give me a minute. My camera is frozen. I'll have to re-log in. Just hold on, and then you can. Okay. Okay. I've just made you host. Wait. How to reclaim the host? I'll give you. Yeah, done. Okay, so now Sarita ji will be taking over. She will be, today is the perfect day actually to have the forgiveness sadhana. आप किसी एक इंसान के बारे में सोच लीजिए जिसको आप forgive करना चाहते हैं. I think she is the better person to guide about it. Sarita ji, would you like to say something until then? Yes, I will give you a brief good morning first, everybody, and thanks Mahima, thanks Nikhil, thanks to Rajan sir for trusting us to do this.
Thank you so much. So I will be talking a little about forgiveness, but जैसे राजन सर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उस दिन कि आप पहले प्लीज प्राणिक हीलिंग के बारे में भी थोड़ा बताइए, because this forgiveness practice that we are going to do today, we have adopted from pranic healing. So I have my co-reader. We are also doing a magic book session. We always do this forgiveness. इसी दिन करते हैं हम लोग. 15वें दिन हमें ये 15 day we always do this practice. So Nikhil, I would request you to unmute Shalini Kasera. She's there with me. She will briefly tell us about pranic healing. फिर हम लोग forgiveness की बात करते हैं, and then we will do the practice. Forgiveness practice, which I request you all please आज करके देखिएगा. Yes, Shalini, you're on. Good morning. I'm Shalini Kasera, a pranic healer. तो आज हम प्राणिक हीलिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि एक आर्ट है. दिस इज एक कला है, एंड इट इज वेरी साइंटिफिकली बहुत डिजाइन किया हुआ है, जो साइंस के ऊपर बेस्ड है. जैसे ये बुक बोलती है ना कि इट इज सो साइंटिफिकली प्रूवन, सिमिलरली प्राणिक हीलिंग भी बहुत साइंटिफिक है. एंड दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड. हम अपने खुद के ऊपर ये हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एज वेल एज किसी और के ऊपर. एंड सिंस ये नो टच थेरेपी है, हम किसी को छूते नहीं है इसके अंदर, तो आप यहाँ से बैठे दुनिया के किसी भी कोने में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर हम पढ़ना लिखना जानते हैं, एज बेसिक एज पढ़ना लिखना जानते हैं, we can learn to do pranic healing. First course करते ही we can start healing, and it is miraculous. Since we are healers, we have practiced it in our lives. और हमने जब ailments को अच्छा होता हुआ अपने आंखों के सामने देखा है, that is when वो faith और belief बढ़ जाता है हमारी इस थेरेपी पे. ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है. आपके डॉक्टर्स या मेडिसिन ये किसी भी चीज को रिप्लेस नहीं करती है. जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है ना, उसका ड्यूरेशन को कम करने में मदद करती है. उस ट्रीटमेंट को हम सपोज सर्जरी है तो उसका पेन या फिर उसके साइड इफेक्ट्स, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में ये हमें बहुत मदद करती है. इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी. एंड वो जो सिम्टम्स हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, इन सबको रिड्यूस करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है. आज के दिन ये 120 कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जा रहा है. एंड ग्रैंड मास्टर चौकॉक सुई हमारे मॉडर्न प्राणिक हीलिंग एंड आध्यात्मिक योगा के फाउंडर है. ये बहुत ही मिराकुलस हीलर रहे हैं. इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऐसी हीलिंग करी जो कि लाइलाज बीमारी बोलते हैं, इन्होंने मिनटों में उसे भी ठीक किया है. कुछ हीलिंग सेशंस में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है. लाइक हम लोग हाथ वेव कर रहे होते हैं व्हेन वी आर हीलिंग समबडी, तो उनके चंद मिनटों में सालों की बीमारी ऐसे गायब हो जाती है. एंड ये इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं विच इज ट्रांसलेटेड इन 27 लैंग्वेजेस. तो ये हमारे जैसे इन किताबों पे बेस्ड होकर ही कोर्स को डिजाइन किया गया है. एंड वी कैन फाइंड इन इंडिया बहुत सारे शहरों में हमारे प्राणिक हीलिंग सेंटर्स है where we can go and start the course. और फर्स्ट बेसिक कोर्स है हमारा. इसमें बेसिक कोर्स करते ही हम हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं. एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कल्चर या रिलीजन. ये किसी के ऊपर आधारित नहीं है. बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी टेक्निक है. और ये बुक अब तक हमें सिखा चुकी है ना, वी आर मेड ऑफ एनर्जी. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ एनर्जी. प्राणा, जो संस्कृत में प्राणा बोलते हैं ना, ये हमारी हीलिंग टेक्निक प्राणा पे बेस्ड है, नेचुरल लॉज पे बेस्ड है. कहीं पे भी किसी भी एरिया, चाहे वो हमारा शरीर का ही क्यों ना एक अंग हो, तो वहां पे अगर डर्टी एनर्जी, डिजीज्ड एनर्जी अगर वहां जमा हो जाती है ना, तो वो अंग काम करना थोड़ा कम कर देता है या फिर डिफिकल्टी हो जाती है हमें. तो इन प्राणिक हीलिंग व्हाट वी डू इज विद द वेव ऑफ आवर हैंड्स हम लोग वो प्राणा को, गंदगी को निकालकर बाहर फेंकते हैं. और जो हमारे अंदर अच्छी, जो हम भगवान से अपने आसपास के एरिया से अच्छी एनर्जीज लेके उस एरिया को एनर्जाइज करके ओवर सम सेशंस, कुछ सेशंस के बाद हम पाएंगे कि वहां की एनर्जी बहुत सुंदर, बहुत साफ हो गई है. एंड हमारा वो पार्ट ऑफ बॉडी बहुत अच्छे से काम करने लग गया है.
It is just not for body. We can do pranic healing के जो हम healing sessions हैं, हम relationship में use कर सकते हैं, हम अपने monetary finances में use कर सकते हैं, many more applications. It is so application based. And ये ऐसी आध्यात्मिक प्रणाली है which we can use it in our daily lives. जैसे हमारा ये magic book, when we अपने खुद के life में अपनी responsibilities सारा कुछ करते हुए, निभाते हुए, we can use this practice of gratitude, right? तो वैसे ही प्राणिक हीलिंग हमको एक जीने का तरीका बताती है. जैसे इन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में व्हाट डू वी से, पॉजिटिविटी, हमारा दिमाग, हमारा जो हमारा इमोशंस है उसको हमको पॉजिटिव जोन में रखना है, राइट? दिस इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन. और ये सबसे लास्ट हर्डल होता है हमारे अंदर से, वो जो हमारी एंगर है, इरिटेशन है, फियर है, हम डर रहे होते हैं, हम फ्यूचर के लिए डर रहे होते हैं, या फिर किसी, जैसे आज रिलेशनशिप चैप्टर में हमने देखा कि इरिटेशन हो जाती है, कोई हमारे लिए अगर खराब बोले, गुस्सा आ जाता है एक बार में. तो ये सारे इमोशंस को निकालने में हमें बहुत मदद करती है. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन टेक दिस इमोशंस आउट ऑफ आवर मेंटल स्टेटस, throw them out and fill ourselves with positivity. जो भी हमें चाहिए, joy, peace, love, happiness, जो चाहिए उससे हम अपने आप को bless कर इस last hurdle को भी overtake करने में बहुत easily we are successful. To let go, to forgive, इसके बारे में Sarita Bhavi, can you elaborate a little more? Yes. So I will give me 5 to 10 minutes. हम लोग बात करते हैं about forgiveness. तो पहले तो let us understand ये forgiveness है क्या? What is it? We've been talking पूरा सेशन में कि forgiveness की बात कर रहे हैं, and क्यों करना जरूरी है? सबसे पहले तो ये वैलेंटाइन का महीना है, so let us increase the love within us. The more you forgive, the more you love. तो ये है ना, ये प्यार को बढ़ाना, ये दयालुता जो बढ़ेगी, ये ग्रीस का काम करती है. ये हर रिलेशनशिप, वॉट एवर रिलेशनशिप हो, वो एक ग्रीस का काम करती है. सो आज वी बीन टोल्ड ना, एक रिलेशनशिप को चुनिए, सम डिफिकल्ट रिलेशनशिप, मे बी किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शादी कर ली हो, एनीथिंग, कोई सिबलिंग्स, यू हैव अ बैड रिलेशनशिप विद मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिबलिंग्स के साथ, किसी ने आपको जब जरूरत थी मदद नहीं की. These are some examples. या किसी ने आपके बारे में बुरा बोला, सबके सामने बोल दिया. So can you think of one such person? एक बार सोच के देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है. एक चेस्ट में एक टाइटनेस किसी ने बांध रखा है. Won't we like to be free of this bond? ये जो बंधन है, इसी को हम तोड़ना नहीं चाहेंगे. And gratitude and forgiveness together, that is the only way. एंड ये फॉरगिवनेस ना, ये सिर्फ आपके लिए है. वी आर गोइंग टू बी वेरी सेल्फिश. ये अपने लिए कर रहे हैं हम लोग, वो दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है. वो हमें माफ करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है. दिस इज फॉर योर सेल्फ. दिस इज प्योरली अ सेल्फिश एक्सरसाइज. ये हम खुद को बचा रहे हैं. महिमा जी ने कहा ना बुक से, वो जलता हुआ कोयला, वो अगर आप पकड़ रखे हो किसी के लिए, यू आर गुस्से में हो, आप ग्रज होल्ड कर रहे हो, तो यू आर होल्डिंग इट कि मैं जब मौका मिले ना उस पे फेंक दूंगा. वो तो बच के निकल जाएगा, ही कैन डक, बट आपका हाथ तो जला ना. तो वाई, क्यों पकड़ के रखना है अपने को ये कोयला? Why do we want to poison ourselves? ये पकड़ना, होल्डिंग अ ग्रज, गुस्सा होना, ये प्रतिशोध में रहना, पता है they build up बीमारीज like डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. अगर आप सोचोगे ना, अगर आपको ये बीमारी है तो डेफिनेटली कहीं मन में तकलीफ है, तो क्यों पकड़ के रखना है? लेट अस स्टॉप पॉइजनिंग आवरसेल्व्स. एंड अगर आपको लगता है मैं क्यों माफ करूं, गलती तो उसने की है, या फिर जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा मैं तो नहीं छोड़ने वाली, उसी को पहले माफ करना होगा. वाई, किसी अपना रिमोट किसी और के हाथ में क्यों देना है हमें? योर लाइफ इज योर ओन. वो माफ करेगा तब मैं ठीक होंगी. नॉट राइट. वी हैव टू बी आवर ओन. महिमा जी ऑल्सो गेव अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि खुद भी अपना ही, आई एम इन चार्ज ऑफ माई सेल्फ. आई डू नॉट रिएक्ट टू अदर्स.
एंड इससे एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इफ यू आर होल्डिंग अ ग्रज, जो आपके रिलेशंस अच्छे हैं ना, आप उनको भी जेओपर्डाइज कर रहे हैं, यू आर उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। क्या है आपके अंदर? गुस्सा भरा पड़ा है, प्रतिशोध भरा पड़ा है, आपके अंदर से क्या निकलेगा आपको पता भी नहीं। किसी ने हल्का सा स्क्वीज किया एंड वो गुस्सा निकला। तो कोई आपको बहुत प्यार भी कर रहे हैं, बट कोई एक हल्का सा कुछ इरिटेशन हुआ एंड आप तो गुस्से से, जितनी जरूरत नहीं है यू उससे ज्यादा गुस्सा दिखा देते हो। तो देयर इज नो नीड। तो इतनी ये प्रैक्टिसेस हमें मिल रही है ग्रैटिट्यूड की, फॉरगिवनेस की। सो लेट अस गेट आउट ऑफ इट। अब ये समझना बहुत जरूरी है सामने वाला आपके साथ गलत क्यों कर रहे हैं। रोंडा बर्न ने भी हमें बताया है ना कि सामने यू आर गेटिंग ओनली व्हाट यू गिव, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर किसी ने आपको चीट किया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमने ही उसके बीज बोए हैं। तो दिस इज जो सामने हमको रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमें चीट कर रहा है, वो तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। वो तो अपना पनिशमेंट जो दे रहे हैं ना, लाइक वी पनिश चिल्ड्रन, सो वो भी दैट पर्सन इज जस्ट अ डिलीवरी बॉय कि तुमने चीट किया था या तुमने हल्का किसी को कुछ किया, मे बी दैट हैज ग्रोन टू अ बिग चीट टुडे एंड आपको कोई बड़े रूप में चीट कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय है। तो उनसे क्या गुस्सा करना। दे आर जस्ट जो कायनात आपको भेज रही है somebody to give what you deserve. So like सब राजन साहब भी उस दिन हम लोग he told us ना, अपने जीवन में मुश्किल इंसान आते हैं, he told us कि आप याद करो कि उस मुश्किल से आपने क्या सीखा, उसका लिस्ट बनाओ। कि if someone cheated you for example, तो आपने उससे क्या सीखा, तो उस इंसान का लिस्ट, उनसे क्या सीखा वो लिस्ट बनाओ। एंड लाइक टुडेज एक्सरसाइज, बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, उनकी अच्छाइयों के लिए, उनकी जो वो आपने बुरा किया उससे आपने क्या सीखा, उसके लिए ऑल्सो वी कैन बी ग्रेटफुल। वो इंसान तो आए हैं शायद आपको टेस्ट करने, आपका पेशेंस टेस्ट करने, आपका प्यार, आपकी नम्रता, वो टेस्ट ले रहे हैं आपका। एंड इफ अगर आप टेस्ट में पास हो गए तभी आप यू विल बी प्रमोटेड, बट अगर आप टेस्ट में फेल हो गए, अगर आप नहीं कर पाए, आपने गुस्सा कर दिया, तो ये लेसन बार बार आएगा। इवन रोंडा सेज दैट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, the lesson will come again and again. इस बार मे बी सम ऑफिस का स्टाफ या ऑफिस का कलीग ने आपको वो लेसन दिया हो, आपने नहीं सीखा। नेक्स्ट टाइम द लेसन will come from someone closer, maybe आपकी सिस्टर इन लॉ या मे बी कोई फ्रेंड, एंड अगेन फिर भी आपने नहीं सीखा, तो अगले जन्म में बी प्रिपेयर्ड कि वो इंसान आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ कोई वेरी क्लोज में आके आपको ये सिखाएगी। दैट लेसन मे बी अनकंडीशनल लव के लिए, isn't it? Our strongest lessons come from our closest relationships. हमेशा होते हैं ना, और सबके साथ तो मेरा बहुत अच्छा है, घर वाले ही मुझे नहीं समझते हैं। Why? Because हमने ही कहीं उनको माफ नहीं किया है, हमने ही अपना लेसन नहीं सीखा है, हमने ही अगर आप किसी ने कुछ गलत किया, आप सब्र करो, आप गुस्सा ना हो, तब तो अपनी बल्ले बल्ले है। बट इफ नॉट देन बी प्रिपेयर्ड की और स्ट्रॉन्गर लेसन्स आएंगे। एंड ठीक है, दूसरे गलती करते हैं, हम भी संत नहीं हैं, हमसे भी गलती होती है, हमने भी दूसरों के साथ बहुत अन्याय किया है, मे बी नोइंगली मे बी अननोइंगली। हमने कुछ बोला, किसी को बहुत बुरा लगा, हमें तो पता ही नहीं। तो ये मौका, व्हेन वी फॉरगिव अदर्स, इससे हम हक जीतते हैं टू रिसीव फॉरगिवनेस। हम जब किसी और को माफ कर देते हैं तो कायनात हमें हमारी गलतियों के लिए भी माफ करती है। तो फॉरगिवनेस तो एक दवा है, जो जाने अनजाने में हमसे गलतियां हुई है उनके लिए हमें एक रेडी दवा मिल रही है। सो इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज समथिंग जो जरूरत है हमारी। ये ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस इज समथिंग वी हैव टू डू, चॉइस ही नहीं है। दैट इज द ओनली वे कि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एंड एज पर द बुक हम लोग मैजिक डस्ट भी डाल सकते हैं,
जो लोग हम लोग को तकलीफ पहुंचाए हैं, जस्ट पुट मैजिक डस्ट ऑन देम। अब हमने जाने अनजाने में खुद से भी खुद को बहुत दर्द दिया है, खुद के साथ अन्याय किया है। किसी ने कह दिया तुमसे तो कोई काम अच्छा से होता ही नहीं है, तुम तो आज कैसी लग रही हो, एंड व्हाट डू? वी गो इनटू एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वी गो डाउन कि मैं तो अच्छी हुई नहीं, मैं तो कभी अच्छी दिख ही नहीं सकती हूँ, आई एम नॉट हैंडसम एनफ, आई एम नॉट प्रिटी एनफ। अपने साथ क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। डू वी रियलाइज दैट? अपने आप को महत्व ही नहीं देते हैं। दूसरे लोग, परिवार के लोग, एवरीवन इज सो इम्पोर्टेंट। अपनी चाहते, अपने डिजायर्स, जो ये किताब हम लोग को फर्स्ट डे लिखाती है, जिसमें भी मैक्सिमम ऑफ अस, मेरे बच्चे को ये मिल जाए, मेरे हस्बैंड को ये मिल जाए। हाउ मेनी ऑफ अस हैव रिटन मुझे ये मिल जाए, आई वांट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ। How many of us have written that? So haven't you neglected yourself? वो खुद से भी हमें माफी मांगनी है। We are going to do both the exercises today. पहले हम दूसरों को माफ करेंगे ताकि हम वो हकदार बन जाए कि हमें माफी मिले, and then Shalini will lead us through this खुद से माफी मांगने वाला एक्सरसाइज। तो नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट 7 times हम लोग नॉर्मली करते हैं, आज हम लोग 3 बार करते हैं। आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर अ प्रैक्टिस। एक पर्सन को इमेजिन करेंगे। देखिए, अगर ये प्रैक्टिस ना, जैसे बार बार अभी निखिल ने भी बोला कि एक बार करने से नहीं होता है, अगर छोटा मोटा इरिटेशन भी है ना किसी से, तो मिनिमम 7 days करना पड़ता है। देन वो अंदर से आपके वो जहर, वो प्रतिशोध वो निकल जाएगा। फॉर 7 days, 7 times in 1 day. Okay, it's a very short exercise. And अगर कोई रिलेशनशिप के साथ हो, जो आपके बहुत खास, आपके पास हो, उनसे बहुत नफरत हो, then कम से कम 21 दिन करना पड़ता है। Okay, so let us start. I think I'll do it 3 times. 3 बार पहले दूसरों के लिए, खुद के लिए, and then for self. तो first we will do it in Hindi. 3 में 1 हिंदी, 1 English, and then back to Hindi. So I will just request you all to sit straight. Close your eyes. Imagine करें कि वो एक इंसान जिनसे आपको बहुत तकलीफ पहुंच रही है, जिनके बारे में सोच के भी इरिटेशन या गुस्सा निकलता है, उनको याद करें और इमेजिन करें कि वो आपके सामने बैठे हैं। उनके आत्मा से हम नमस्ते करते हैं। आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। मैं आपको आपकी सारी जाने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा करती हूँ, जो आपने अपने विचार, कथन या कर्म से किए हैं। मैं सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी जलन को बाहर निकाल रही हूं। मैं पुरानी बातों को जाने दे रही हूं। अपने आप को महसूस करें कि आप बहुत रोशन हो रहे हैं। सारी गंदगी बाहर निकल के एक प्रकाश से आप भर रहे हो। मुझसे भी गलतियां हुई है। मैंने भी आपको जाने अनजाने में बहुत दर्द दिया है। आप भी मुझे क्षमा करें और सारी पुरानी बातों को जाने दें। मैं चाहती हूं आपके और मेरे बीच में शांति और प्रेम रहे। भगवान आपको और मुझको दोनों को शांति दे। भगवान आपको और मेरे सारे नकारात्मक कर्मों को माफ करे। मैं आपको रिहा करती हूँ। मैं आपको जाने देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम
We'll do it for the second time. Atma Namaste. उसी इंसान को इमेजिन करें आपके सामने. I salute the divinity within you. We are all children of God. We all make mistakes. We all are evolving. Evolution involves time, process, and lots of mistakes. I forgive you for all your mistakes, for all the pain and hurt you have caused to me through your thoughts, words, and actions, either intentionally or unintentionally. I let go all the hurt and pain of past negative memories. Please go in peace. Just visualize yourself becoming brighter and brighter. I too have made my share of mistakes and caused you hurt and pain, knowingly or unknowingly. I ask forgiveness for all my mistakes I have done to you. You also let go. May God's peace and love be with you and with me. Go in peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. For the last time. आत्मा नमस्ते. मैं आपके अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ. हम सब परमात्मा की संतान हैं. हम सभी गलतियां करते हैं. मैं आपको आपकी सारी जाने अनजाने में की हुई गलतियों के लिए क्षमा करती हूँ, जो आपने अपने कथन से, विचार से या कर्म से किए हों. मैं सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी जलन को बाहर निकाल रही हूं. मैं पुरानी बातों को जाने दे रही हूं. अपने आप को बहुत रोशन, एक दिव्य प्रकाश आपको भर रहा है. आप हल्के महसूस कर रहे हैं. मुझसे भी गलतियां हुई है. मैंने भी आपको जाने अनजाने में बहुत दर्द दिया है. आप भी मुझे क्षमा करें और सारी पुरानी बातों को जाने दें. मैं चाहती हूं आपके और मेरे बीच में शांति और प्रेम रहे. भगवान आपको और मुझे दोनों को शांति दे. भगवान आपके और मेरे सारे नकारात्मक कर्मों को माफ करें. मैं आपको रिहा कर रही हूं. मैं आपको जाने दे रही हूं. ओम शांति, शांति, शांति. ओम. उस इंसान के लिए सहानुभूति महसूस करें. उसे ब्लेस करें विथ पीस, विथ लव. एक इमेजिन करें आप उस इंसान से एक कोई तार से बंधे हुए हैं. वो तार अब कट रहा है. जस्ट इमेजिन कटिंग इट अवे फ्रॉम यू. कट, कट, कट. लेट गो. आई लेट गो. गो इन पीस. थैंक यू. थैंक यू. Shalini will lead us through the self-forgiveness exercise. Nikhil, kindly unmute her. Now we will do it for ourselves. हम अपने खुद के लिए करेंगे. अपनी आंखें फिर से बंद कर लीजिए एंड अपने आप को अपने सामने बैठा देखिए. आत्मा नमस्ते. मुझे एहसास है कि मैं खुद के साथ बहुत कठोर रही हूँ और मैंने अपने आप को इसके लिए क्षमा कर रही हूँ.
मैं अपनी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ख्याल न रखने के लिए, खुद से प्यार न करने के लिए, अपने आप को कभी भी प्राथमिकता न देने के लिए, और सबसे ज्यादा खुद को जैसी हूं वैसी स्वीकार न करने के लिए क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर की एक रचना हूँ। मैं खुद से प्यार करने का, अपने प्रति आभारी होने का और खुद को जैसी हूँ, मेरा भौतिक शरीर और मेरी मानसिक क्षमताएं जैसी हैं वैसी स्वीकार करने का वादा करती हूँ। इमेजिन कीजिए आप बहुत ब्राइट हो गए हैं, बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कि एक काले धुएं के रूप में आपके अंदर से वो सारा भारीपन बाहर निकल गया है। ओम शांति 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 ओम। I am aware that I was being very cruel with myself, and today I forgive myself for it. I have not taken care of my emotional and physical needs. I have not loved myself enough. I have not given myself the priority and topmost for not accepting myself as I am. I forgive myself. I forgive myself from the bottom of my heart. I forgive myself for all the unwanted thoughts जो हमारे मन में चलता रहता है खुद को क्रिटिसाइज करते हुए. I let go of all those thoughts. I am a child of God. I am God's creation. I accept myself as I am, physically, mentally, emotionally. I love myself as I am. I am perfect as I am. Feel the lightness. Feel the brightness. Feel the brightness as though it is radiating from you around the entire space that is around you. Everything is getting lighter and brighter. For the last time, मुझे एहसास है कि मैं खुद के साथ बहुत कठोर रही हूँ और मैंने अपने आप को इसके लिए क्षमा करती हूँ. मैं अपनी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ख्याल न रखने के लिए, खुद से प्यार न करने के लिए, अपने आप को कभी भी प्राथमिकता न देने के लिए क्षमा करती हूँ. मैं स्वयं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर की एक रचना हूँ. मैं खुद से प्यार करने का, अपने प्रति आभारी होने का और खुद को जैसी हूँ, मेरा भौतिक शरीर और मेरी मानसिक क्षमताएं जैसी हैं वैसी स्वीकार करने का वादा करती हूँ. I love myself. I am a point of light. मैं बहुत ही सुनहरे प्रकाश से भर चुकी हूँ. ओम शांति 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 ओम. Feel the peace within you, the love, the joy. आप खुद से मिलिए, अपने आप को देखिए. Pamper yourself, love yourself. Be kind to yourself. You are your best friend. जब भी आप रेडी हो, आंखें खोल लें एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ.
deep, deep gratitude to each one of you who have been so patiently listening to both of us. From the bottom of our hearts, thank you. Thank you so much, Shalini ji. Yes, बहुत light feel हो रहा है after doing this, and मतलब एक अलग ही experience है. It's very self-experiential basically. Not words मिलाना थोड़ा मुश्किल होएगा. So amazing. Thank you so much, both of you. Thank you for the opportunity. Thank you so much. So if we have any questions, there was a question, I'll read it out. किसी ने पूछा है कि अगर हम gratitude practice कर रहे हैं तो हमारे को ये सारी practices करनी जरूरी है क्या? So what I feel is कि कई बारी जो basically book है, basically magic book है, तो वो हमारे को काफी it's a basic as well as a advanced book sort of, ठीक है ना? वो हमारे को काफी चीजों में हेल्प करती है. बट कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बीमार, इफ यू हैव अ डिजीज, आपको कोई डिजीज कैच कर गई है, तो कई बार ये डिजीज के लिए आपको कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, या डॉक्टर ने आपको कुछ प्रेस्क्राइब किया जो काम नहीं कर रहा, तो उस टाइम क्या करेगा डॉक्टर? उसको आपकी डोसेज को इंक्रीज कर देगा. सो आई थिंक दीज ऑल जो ये है, जैसे प्राणिक हीलिंग हो गई, या हम होपोनोपोनो करते हैं, या हम दूसरी और क्या कहते हैं टेक्निक्स ट्राई करते हैं, दीज आर बेसिकली इंक्रीजिंग, एक तरह ना इंक्रीज द डोज हो गया, बेसिकली आपकी डोज इंक्रीज हो गई है. दीज आई थिंक दीज ऑल टेक्निक्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर स्पॉट इन योर लाइफ जो आपको हील करना चाहते हैं. That's what I feel. Gratitude practices आप करेंगे तो I think वही काफी आपकी issues को clear कर देता है, काफी healing कर देती है काफी चीजों को. But if it is more deep rooted, तो उसके लिए I think these techniques work. If you have any questions from the for pranic healing, so we have two experts here जो आपको उनका जवाब दे पाएंगे. Do we have any questions? Let me unmute you. All right, Bhavini Mistry ji. Yeah, hi. It was wonderful session, and especially these two prayers. It was so moving to forgiveness prayer and self-forgiveness prayer. So I don't have a question, but I have a request that can we have those two recordings of those two prayers so that we can practice every day from these two experts, if they have any short audio. So we can request them, and Yeah. if you have them, you can please post us to me, and I'll forward it to all the groups that we have. Yeah. We That's have all a shorter version also that is just takes about 1 minute each. So then 7 minutes बहुत easy हो जाता है. So Right. I can give this longer version if you want in writing, and we have the shorter version recorded. So we Okay. can share that. Sure. Please Thank give you so both. much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Meeta ji, if you have any question. Yeah, I have a question to Shalini ji and Sarita ji. I am planning to do this course overcoming Saturday, Sunday. So I had few queries about it. Is it right platform to ask here? You can contact us directly also, no issues. Yeah, so can you just message me your number, please? I'll put it on the chat. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. Do we have any other questions? Okay, Sakshi Surve. Please ask. आपका question क्या है? 943. Yes, wonderful session by both of you. Thank you so much. So is the understanding that forgiving yourself and forgiving the bad relation that you have, for example, if you have it, is that all about pranic healing, or we have other corners of it, we have other aspects of it? And like Shalini explained in the beginning, it's a whole new science, and it's a whole new path of spirituality and healing. There's a whole lot more to it. You can even go online, just search pranic healing, you'll get a lot about it. And in fact, my gratitude is to the magic book. I've been into pranic healing for
8 to 9 years now. But after coming into gratitude book, into coming into magic, coming into contact with Ashmin ma'am, now we understand pranic healing even better. You know, जो इसमें applicability है इस किताब में, the simplicity of this book. And so everything, you know, now sort of falls into place. So, but pranic healing, there's a lot you can learn. I think Shalini had explained very much in detail in the beginning. It's kind of a way of life. हमारे virtues को, हमारे many aspects जो हम already we know as Indians, I think बहुत spiritual हम as it is ही हैं. We are into that mode right from day one, but this enhances us. This gives us more ways to practice it in our daily life. हमारे profession में we can practice pranic healing. For our money matters, we can you know, practice this, how to enhance our inflow of money. जैसे gratitude में हम हर एक area में we can, for relationships, for money, for health. Similarly, in pranic healing, we have techniques which we can apply in different areas. और उसको हम you know, उस process को, उस journey को हम faster कर सकते हैं. Right, Neeraj, can you yes. If you have any question. Yes, sir. क्या हो गया? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, मेरे मतलब एक एक्सपीरियंस है जो मुझे अभी हुआ है, मतलब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आके, कि जब हम जैसे अभी मैडम ने कहा कि मुझे मतलब हीलिंग, प्राणिक हीलिंग करने के बाद तो मतलब फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी लगी. तो मतलब प्राणिक हीलिंग से जो हम करते हैं ना, हमारा जो गट मतलब उनके लिए निकल जाता है, तो वो एक ब्लैंक होल हो जाता है. तो उसको भरने के लिए फिर ग्रेटिट्यूड है. जब हम प्राणिक हीलिंग के बाद फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रैक्टिस हो जाती है. मतलब फिर सब कुछ हील हो जाता है. मैं क्योंकि हमने अपना वेसल पहले एम्प्टी कर लिया ना, मतलब ये सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैंने इसका एक्सपीरियंस. उसके बाद उसी पर्सन के लिए फिर आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है. तो फिर ये दोनों एक्सरसाइज मिला के मतलब बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं. So true. Thank you. So true. Right, it's like जैसे अभी हमने last year हमने मैम के साथ मिरर वर्क भी किया था. So it's a way of basically बहुत सारे mediums हैं. It's basically you have to empty your vessel, as she said. You have to empty your vessel and then you can coat it with anything. Gratitude तो एक बहुत मतलब एक बहुत easy way है, क्या कहते हैं, किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, because it's accessible to anyone. Right, एक आप समझिए कि एक अपने आप को एक ट्री की तरह करिए, उसमें इतने ब्रांचेस हैं. So any branch can be termed as anything. कोई भी क्या कहता है, आप उसको रिलेशन में ले लीजिए. So similarly medicine तो एक basically ट्री है, उसके different branches हैं. So gratitude can be a branch, pranic healing can be a branch. So we have to take it, I think we can take it that way. और क्या कहता है, क्योंकि इतनी उसमें deep discoveries हो चुकी हैं. We are just hitting the crux of it. और जितना आपका क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी होगा, इंटरेस्ट होगा, you will find more and more things. I've discovered, क्या कहते हैं, मैजिक बुक की तरह कम से कम 5 बुक हैं that I've discovered. So it is all upon your curiosity कि आप कितना उसको अपने आप को enhance करना चाहते हैं. And all, I think all these exercises basically evolves you as a person. And one more thing, I think Nikhil ji, I would like to add here कि आपका किससे connect हो गया है. There are so many modalities. Not everybody can connect with everything. So it's like, you know, आपको किससे आप किससे connect होकर you can imbibe all those what is needs. We need to structure our life and go towards our goal. The desire, हमारा ultimate goal to evolve है, to become a better person is what our goal is today. I think every human being wants to become a better person than what I am today. So happiness, joy and जो जिससे connect करके जिसको जिसमें मिल जाए, I feel. इसलिए मैंने जैसे हमारे सब सेशंस शुरू हुए थे डे 1 डे 2 पे, क्योंकि मैंने इसको बहुत इजीली तब उसको मैंने इसको दाल चावल से आइडेंटिफाई किया था डे 1 डे 2 पे, बिकॉज दाल चावल हम डेली बेसिस पे खा सकते हैं. जो सारी टेक्निक्स हैं, इट कैन बी टर्म्ड एज इटालियन, चाइनीज, तो ये आप रोज नहीं खा सकते. बट दाल चावल जो है, इट इज अ डेली बेसिस हमारी फूड है. सो ग्रैटिट्यूड इतना ईजी है कि कोई भी उसे इजीली कनेक्ट कर सकता है. That's what I feel.
वेरी ट्रू इनफैक्ट यस द ग्रेटिट्यूड आने के बाद लाइफ में ना फिर चाहे कोई हरे रामा हरे कृष्ण में हो एनीथिंग बट ये तो दाल चावल है your this example will go with us everywhere. Thank you so much. Neeta Babri, you have a question. It's more of a thankfulness to Shalini Di and Sarita, both of them. Matlab, I have been doing their magic book also along with the others. It is amazing, and thank you so much for y'all for letting us do it and for doing it so nicely and itna explain karke with all the examples. Thank you so much, both of you. Thank you. Love you. Thank you so much. Thank you so much. All right, Nidhi, yes, you can ask a question. Can you unmute yourself? Okay, good morning. I won't be able to switch on my camera at this time, but my question is that the way we have done, Abhi, I have joined the session just 10 minutes before jab aapka pranic healing chal raha tha. So it was a wonderful feeling after it. So my question is that like somebody else has also asked in this session that, you know, if the relationship is going good with the husband and everything is going good, but when then there is no sexual intimacy jaisa hona chahiye, so in that case this pranic healing will be guided the way you are teaching us, or is there any other way we have to go deeper into that thing? Like, what do we have to do in that situation to make it more better? That is more to do with relationship. Isme forgiveness, like today we have been talking about forgiveness. Okay. So in that, you know, pranic healing mein, like Shalini had explained in the beginning, we work on relationships. So that requires a certain healing, certain counseling. Okay, so that a pranic healer can maybe help you to improve the relationship. But like we are talking, this book ka first ye jo gratitude hai for that relationship, ya for having a very good sexual relationship with each other, dono ka agar wo gratitude aaye, then that is the first step. And of course, if your direct question is can pranic healing help? Yes, it can help. You have to visit a counselor and a pranic healing healer and a counselor for that. But if the husband is not ready for all these things like pranic healing and everything, so in that case also we are the only ones who has to take this. Obviously it works. Anything works better. Even gratitude, agar samne wala taiyar nahi hota hai, only one way, when another person is involved, always it works better if the other person is involved. If not, we can have some improvement. And like you said, I mean, ye formula to gratitude mein milta hai ki if you're you're grateful for the other person, then the other person will come to your mode of thinking at some point. And pranic healing, of course, they can help you with relationships, for that other person also to begin to think like you feel. But first it begins with yourself. Okay, thank you. Got my answer. Thank you so much. Thank you so much. Do we have any other question for sharing? I think it's 8 o'clock. So I thank you all for joining in today. Thank you so much, Shalini ji and Sarita ji, for your amazing session. I hope a lot of questions have been answered. बहुत लोगों के questions थे जो answer हो पाए. कुछ लोग they have already shared their number. If you could share their numbers again. So if anyone has any question that they cannot ask, आप उसको directly नहीं पूछ सकते यहाँ पे. So you can directly contact them. And thank you so much again. And Nikhil ji, one more thing I would like to mention here. Suppose इसमें और clarity चाहिए what pranic healing is exactly. YouTube पे there are many videos. Facebook पे there are many masters who upload their videos and वो अपने sessions और अपनी teachings को upload करते हैं. तो उनको सुन के एक और clarity मिल सकती है कि exactly pranic healing कैसे काम करता है. Right. And most cities have centers. आप अपने center के लिए डालोगे और we can help you find a center in your city. Most cities have centers. Thank you. And there are many times all the centers take introductory sessions. So if you attend one, बहुत clarity आ जाती है. Thank you so much everyone for joining in. See you tomorrow 6 a.m.
Thank you for listening to us. Thank you.